तो दोस्तों अब मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया और हम जा रहे हैं गिनीज स्टोर हाउस, जो कि वर्ल्ड फेमस है यहाँ पे। वो भी वर्ल्ड में ज़्यादा फेमस है गिनीज। गिनीज जिन लोगों को नहीं पता, वो एक आयरिश बियर है जिसका कलर बिल्कुल डार्क रूबी कलर होता है। रूबी या रेड बोलो, ब्लैक। वैसे देखने में आपको ब्लैक लगेगी, लेकिन जो उसका एक्चुअल कलर है वो डार्क रूबी कलर है। और उसका जो टेस्ट है वो कॉफ़ी की तरह लगता है, जो कि मैंने सुना है। अब हम वहाँ पे जाएंगे और देखते हैं वो कैसे बनती है, क्या उसका डिस्टिलरी प्रोसीजर है, वो सब चेक करेंगे। मैं आपको एक यहाँ को जो फेमस ब्रिज है उसका भी व्यू दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने सोचा 2.5 किलोमीटर का रास्ता है, बाय वॉक ही चल लेता हूँ, क्या बस और टैक्सी वगैरह करनी। बट हालत ख़राब हो गई है मेरी तो पैदल चल चल के, और अभी तक पहुँचे नहीं है। अभी भी मैप में दिखा रहा है कि 500 मीटर दूर है, तो ज़्यादा दूर तो नहीं है, पास आ चुके हैं बहुत। और बट मेरी हालत ख़राब हो गई, पानी भी नहीं पिया ना मैंने, दिक्कत ये है। तो अभी कोई ग्रोसरी स्टोर वगैरह आता है तो उससे मैं पानी की बोतल लेता हूँ, बट मैं थक चुका हूँ यार टोटली। तो दोस्तों हम गिनीज स्टोर हाउस में आ चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने सेल्फ गाइडेड टूर लिया है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो दोस्तों हमें इन्होंने पास दिया है बियर टेस्ट करने के लिए, और अगर बंदा एडल्ट उसे मिलता है पास ये गिनीज स्टोर हाउस में गिनीज बियर को टेस्ट करने का। तो टेस्ट करके देख लेंगे, वैसे पीते तो नहीं है हम, बट टेस्ट करने में क्या जा रहा है। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं गिनीज स्टोर हाउस के अंदर, और यहाँ पे दिखा रखा है कि क्या क्या ब्रूइंग के प्रोसेस होते हैं, तो वो हम चेक करेंगे और देखते हैं सारा, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों इस दिखा रखा कि ये जो कास्क हैं वो कैसे बनते हैं, पूरा प्रोसेस। are struck. The mob driving home the child. Another handmade cask is ready for the road, and the look of satisfaction on the face of Master Cooper Dick Flanagan shows justifiable. तो दोस्तों अभी हमने वीडियो में देखा जो एक कूपर बनता है, कास्क जो बनता है, ये रिसाइकल होके भी 10 साल तक के लिए चल जाता है। और इसको बनाने के लिए मतलब कितने सारे लोग लगे, जब उस समय में इक्विपमेंट वगैरह नहीं होते थे, तब भी हैंड क्राफ्ट से पूरा बने हुए सारे कास्क। और एक कास्क की जो लाइफ स्पैन होता है वो 10 ईयर्स होता है। और आपको पता है जब एक सड़े जाते तो उनको पता कैसे लगता है कि ये रिसाइकल मतलब होने लायक नहीं है, तो
तो इन्होंने बंदे बिठा के रखते हैं स्मेल करने के लिए उसे, तो जब तक उसकी स्मेल एक स्पॉइलेज वाली स्मेल नहीं आती उसमें से, तब तक ये इसको डिस्कार्ड नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये सारे इनके टूल्स हैं जो ये यूज़ करते थे कास्क बनाने के लिए। It is then subjected to steam at a pressure of 130 pounds per square inch for half an hour. A wire rope is looped over the splay end and drawn tight by दोस्तों दिखा रखा है 232 डिग्री सेल्सियस पे ये अपने रोस्ट करते हैं बार्ले को। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बार्ले कैसे दिखता है, 190 डिग्री पे बार्ले कैसे दिखता है, 225 डिग्री सेल्सियस पे जो बार्ले का कलर है वो देखोगे आप दोस्तों थोड़ा सा चेंज हुआ था, डार्क ब्राउन। एंड दैट्स द फाइनल प्रोडक्ट 232 degrees Celsius and it's very dark brown in color. Here at St. James's Gate, we've been working with Irish barley farmers and maltsters for generations. Over the years, we've perfected the art of roasting at St. James's Gate. We roast at exactly 232 degrees. Any higher, the barley catches fire. Any lower, the beer won't develop its unique character. It's our roasted barley that gives Guinness its iconic colour, taste and aroma. दोस्तों हमें प्रोसेस लिखा हुआ है Here at St. James's Gate, we've been working with Irish barley farmers. माइलिंग, ये है मैशिंग, बॉइलिंग। दोस्तों ये है इनका ब्रूइंग प्रोसेस, इंग्रेडिएंट, माइलिंग, मैशिंग, सेपरेशन, बॉइलिंग, ये सारे प्रोसेस दिखे हैं उनके।
लिखा हुआ है 300 million bubbles in every pint. Roasts at exactly 232 degrees centigrade. The yeast will only be used for a maximum of 8 subsequent brews before it becomes exhausted, and a new yeast starter will need to be propagated. The head height of draft Guinness should be between 12 and 18 millimeters. Storehouse 4 is one of the most technologically advanced and environmentally sustainable breweries in the world. दोस्तों अब अभी हम इनके टेस्टिंग रूम में जा रहे हैं. Job is to go to each pod, have a smell, see which ones you like, see which ones you love, see which ones might even have a familiar smell. All of the pods look the same, but they are all very different smells. They're all key aromatic ingredients of Guinness, so make sure to get around to each of these pods. We're going to get started as soon as we have everyone in the room. So be sure to get around to each pod. Smelling these is going to enhance your tasting in a couple of minutes. Start your tour. So we're in the first of the 2 tasting rooms today. This one is called the White Room. Now, it's called this for obvious reasons. The bright white lights are designed to alert and stimulate your senses, as we believe if you indulge in your senses, you'll have a more enjoyable experience. So if you didn't hear me on the way in, 4 pods around the room, each of them containing a key aroma of Guinness. So I'm going to quickly talk you through each pod, what it adds to our beer, and then we're going to head into the next room for a guided tasting. So on my left here at the front, that's the malted barley. It's a source of all sugars and sweetness in Guinness, and it gives off a smell quite like biscuits or cereal. Behind that in the corner, that one is the beer esters. Now this is the odd one out of the bunch. It's not a physical ingredient we add into the Guinness, it's a byproduct of fermentation, which just means when yeast is added to the brew, that is the smell that you would get. Which is quite nice because it smells like butterscotch or toffee. Closest to the doors you came through, they're the hops. They're a tall vine-like plant you would have seen downstairs. They're also a natural preservative, so they keep the Guinness fresher for longer. And it adds a lovely dry and bitter finish to the drink. This pod tends to smell quite earthy, florally, or even citrus-like. Last but not least then, we have the star of the show, the fan favourite, the roasted barley. Now everyone knows this pod because it smells of coffee or dark chocolate, and that's because we roast our barley in a very similar way to coffee beans or cocoa beans. So all of these aromas come together to make up every single Guinness, no matter how big, or in today's case, how cute and adorably small. Oh, look at that. Isn't that the cutest little Guinness you've ever seen? I think that deserves an ah. Ah, look at that. So, in a moment, I'm going to invite you all up to the bar, but I'm going to give one lucky person the chance to win an extra sample. So we'll see who's been paying attention during the tour. So, Guinness is often referred to as the home of the black stuff. This is a bit of a white lie though. Guinness is not actually black. So with a show of hands, could someone tell me the true colour of Guinness? Dark ruby. Dark ruby red is correct. Brown Guinness, the foam at the top
is actually made in nitrogen gas, and it's a very bitter taste. So if you sip on Guinness, all you're going to get is the bitterness from the foam at the top. Instead, what you're going to do is you're going to take a big mouthful, making sure तो दोस्तों अभी हम टेस्टिंग रूम में गए थे, तो बंदे ने क्वेश्चन पूछा कि जो गिनेस है उसका जो कलर है वो कैसा होता है। तो मुझे याद कैसे था कि मैं जब बस का टूर ले रहा था तो वहाँ पे वो कुछ बता रहा था उसके बारे में, तो उसने बताया था कि जो गिनेस का कलर है वो एक्चुअली ब्लैक नहीं डार्क होती है। तो उससे मैं रिकॉल कर पाया अपनी नॉलेज को और मैंने हैंड रेस करा और मैंने बोला कि इसका कलर डार्क भी होता है। तो मुझे एक एक्स्ट्रा टेस्टिंग गिनेस मिली छोटे कप में, और देखो सबके सामने भाई का नाम हो गया। A woman needs a man like a fish needs a bicycle. That is epic. कितना अच्छा बना रखा है इन लोगों ने। टिक फॉलोड, टिक टिक टिक, गजब। And we're proud to say that many of us have entered these gates in the footsteps of our parents and our grandparents. We're only 255 years into 9,000 year lease. We have a lot more beer to make. A flavor unlike anything else. A look all of its own. Made to a time-honored recipe. What else tastes like it? Nothing. Make it a night you'll remember. दोस्तों ये ऊपर से व्यू है पूरे डबलिन का। ये गिनेस स्टोर हाउस के ऊपर एक बार है, ग्रेविटी बार नाम है इसका, इसके ऊपर से पूरा व्यू है। तो यहाँ पे दोस्तों ऊपर एक ग्रेविटी बार है पे 5th फ्लोर पे गिनेस के। तो इन्होंने हमें बियर दिया टेस्ट करने के लिए, जो कि हमें टिकट के साथ फ्री मिला, एक पाइंट। देखते कैसी होती है, बट ये है गिनेस, आपको दिखाता हूँ। तो हम जब नीचे टेस्टिंग रूम में, तो उन्होंने बताया था कि आपको जो ये फोम है नाइट्रोजन का बना होता है, तो अगर इसको पहले टेस्ट करोगे तो बहुत कड़वी लगेगी ये, और अगर पूरा एकदम ज़्यादा मतलब मुंह खोल के मैं बोलूँगा, मुझे वर्ड बोलना नहीं आ रहा, कि मुंह खोल के आप ज़्यादा पियोगे तो उसका टेस्ट इतना बिटर नहीं आएगा। तो मैं ट्राई करता हूँ। इतनी कड़वी नहीं लगी, कॉफ़ी जैसा टेस्ट है इसका यार, अजीब है। चलो दोस्तों, मैं देखता हूँ कितनी पी सकता हूँ, उतनी पीता हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। दोस्तों ये ऊपर से भी है पूरा डबलिन का। तो दोस्तों यही था डे 3 डबलिन के अंदर। हमने आपको दिखाया कि पूरा ब्रूइंग प्रोसेस क्या होता है गिनेस का, और गिनेस स्टोर हाउस को विज़िट करा, जो कि एक आइकॉनिक लैंडमार्क है डबलिन में। तो इसी तरह हम डे 3 को क्लोज़ करते हैं, और मैं भी निकल रहा हूँ एयरपोर्ट पे, और हम जा रहे हैं ग्लासगो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जगह पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।